गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लीगल फिक्शन पार्टी मर्जर्स। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की 2026 मार्च की एक रूलिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में, जो कि जिसमें कि एक फोकस आ गया दोबारा से लीगल डॉक्ट्रिन, जो कि डीमिंग क्लॉजेस को लिमिट करती है, जिसको हम कहते हैं लीगल फिक्शन। अब इसका जो है इम्पैक्ट इस पर भी होगा कि पार्टी मर्जर्स कैसे होते हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए एंटी डिफेक्शन लॉ। तो लीगल फिक्शन एक ऐसा डिवाइस है हमारे लॉ में जिसमें कि माना जाता है कि कोई चीज़ सच है, चाहे वो फैक्चुअली एक्यूरेट ना भी हो, सिर्फ एक लीगल रूल को अप्लाई करने के लिए उसे सच मान लिया जाता है। जैसे एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, उसको नेचुरल चाइल्ड ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स से मान लिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसका मिसयूज़ हो सकता है। मिसयूज़ कैसे हो सकता है? जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि आपके कॉलेज में कॉलेज का टाइमिंग है 8 से 12 के, लेकिन आपकी अटेंडेंस होती है 9 बजे के हिसाब 9 बजे रोज़, और ये अज्यूम किया जाता है कि जो 9 बजे प्रेजेंट है मतलब वो पूरे दिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप जो है 8:50 पर आते हो और आप जो है 9 बजे उस टाइम पे प्रेजेंट होते हो, तो आपका प्रेजेंट लग जाता है लीगली और फाइन कि हाँ आप मतलब 9 बजे उस टाइम पर प्रेजेंट है जब आपकी अटेंडेंस लगी, लेकिन आप 8 बजे जो कॉलेज था उस टाइम पर नहीं आए हो। लेकिन लीगल, ये एक तरह से लीगल फिक्शन क्रिएट हो गई है कि आप लीगली तो सही हो, लेकिन जो रूल है 8 बजे कॉलेज आने का वो आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो लीगल फिक्शंस का इसको हम मिस यूज़ मानेंगे। एक बार अगर लोग प्रिटेंस को फैक्ट की तरह ट्रीट करने लगें तो वो डेंजरस बन सकता है, ठीक है। कि मतलब आप 8:50 पर आ जाते हो, उसको आप लोग फैक्ट मानने लगें तो वो डेंजरस हो जाएगा। सभी ऐसा करने लगेंगे कि 8 बजे वाली क्लास फिर कोई लगाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो लीगल फिक्शन का डॉक्ट्रिन है, इंडिया में ये बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड एक्ट में आया। एक कैलकाटा बेस्ड कंपनी थी जो वैक्सीन्स बनाती थी और उसको जो है बिहार में बायर्स खरीदते थे। बिहार जो है इसे टैक्स करने लगा इस सेल को, कहा कि सेल जो है वो जो है वहाँ पर हो रही है जहाँ पर गुड्स जो है डिलीवर हो रहे हैं कंजम्पशन के लिए। तो एक तरह से इसमें लीगल फिक्शन क्रिएट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि डेफिनेट पर्पज़ के लिए लीगल फिक्शन क्रिएट की जाती है और वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए होनी चाहिए, उसको एक्सटेंड आप लेजिटिमेट बियॉन्ड इट्स लेजिटिमेट फील्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही एक और केस था 2026 का, जो मार्च का रूलिंग थी, जिसमें कि 2 शुगर केन ग्रोअर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक केस था, जिसमें कि जो विलेजेस थे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ग्रोअर्स के, शुगर केन ग्रोअर्स के, वो उत्तर प्रदेश और पार्टी में आते थे थोड़े से, और थोड़े से आते थे उत्तराखंड में, क्योंकि जब 2000 में न्यू स्टेट बन गई थी। तो एक मेंबर जो था इस सोसाइटी का, उसने कहा कि सोसाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है डेट ऑफ बाइफर्केशन से। यहाँ पर लीगल फिक्शन क्रिएट हो गया है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिनाई करा, कहा कि जो ओरिजिनल पर्पस था सोसाइटी का वो आपको सिर्फ एक स्टेट में बनाने का था। चाहे लीगल जो है प्रिंसिपल्स चेंज हो गए हैं तो उसकी वजह से आप 2 स्टेट्स में आ गए हो, बट आपकी सोसाइटी जो है वो ओरिजिनली एक ही स्टेट के हिसाब से थी। तो इसको आप ऐसे स्ट्रेच करके जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते सोसाइटीज़ के जिनका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सिंगल स्टेट में ही कन्फाइंड था, ठीक है। तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेनिफिट था उनको वो नहीं मिले फिर, ओके। तो इसका एंटी डिफेक्शन लॉ पर भी जो है इसका इम्पैक्ट हो सकता है। खासकर 10th शेड्यूल, जिसमें कि ये प्रोविज़न है कि 2/3 ऑफ मेंबर्स जो है अगर लेजिस्लेटिव पार्टी के जो है एग्री कर देते हैं मर्जर को, पैराग्राफ 4 के अंदर ऑफ कोर्स, तो उसको मर्जर जो है वो माना जाएगा, ठीक है। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने साल 2007 में राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य केस में क्या कहा कि जो लेजिस्लेचर पार्टी थ्रेशोल्ड है वो अकेला थ्रेशोल्ड नहीं होना चाहिए सब्सटैंटिव इवेंट का, पार्टी मर्जर का। स्पीकर के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है 10th शेड्यूल में कि वो रिकॉग्नाइज करे एक स्प्लिट या मर्जर को, और लेजिस्लेटर्स अकेले ही सिर्फ मर्जर इफेक्ट नहीं कर सकते, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका भी सब्सटैंटिव डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इसका केस जो है राज्यसभा चेयरपर्सन ने जो भी एक्सेप्ट किया है आम आदमी पार्टी के एमपीज़ को विद इन द बीजेपी, ये केस जो है इसके ऊपर ये लीगल फिक्शन का अगर हम क्लॉज लगाएं तो जो है बंगाल इम्यूनिटी और राणा रूलिंग्स जो है वो इसकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में ये जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गवर्नर्स डिस्क्रिशन वर्सेस डेमोक्रेटिक मैंडेट। टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन जो है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का कि डिले करना स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ टीवी के लीडर की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ये शुरू हो गई है कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स कितनी है। तो गवर्नर ने रिपीटेडली टीवी के लीडर को कहा है कि आप प्रूफ ऑफ सपोर्ट दिखाओ 118 MLAs का, तब तक हम आपको स्वेरिंग इन नहीं करने देंगे। टीवी के जो है वो आपको पता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। इवन उन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट लिया तो भी उनका जो टैली है वो 113 तक ही पहुंचा है, अभी भी मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंचा है।
तो गवर्नर जो है ट्रेडिशनली रिलाई करता है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या कोलिशन होता है उसे बुलाकर कहता है कि गवर्नमेंट आप बनाओ और फिर फ्लोर टेस्ट असेंबली में आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करो। गवर्नर ने लेकिन कहा है, इस बार क्या कहा है कि हमको प्रायर प्रूफ मेजॉरिटी का दो, तभी जो है वो आगे हम बढ़ेंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी पे। तो इससे क्रिटिसिज्म आ रहा है ऑपोजिशन पार्टीज़ का और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर होता है वो कोई पर्सनल डिस्क्रिजन नहीं होता, वो बेसिकली एक्सरसाइज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हिसाब से। फ्लोर ऑफ द असेंबली जो है वही लेजिटिमेट फोरम होता है डिटर्मिन करने का मेजॉरिटी सपोर्ट को। जुडिशरी ने रिपीटेडली एम्फोसाइज किया है कि लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ असेंबली फ्लोर पर ही टेस्ट हो सकती है, गवर्नर उसको सब्जेक्टिवली नहीं डिसाइड कर सकते। उत्तराखंड क्राइसिस भी जो 2016 का हुआ उसमें भी फ्लोर टेस्ट को अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया मेजॉरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, गवर्नर जो है उसका अगर हम देखें फेवर में कि गवर्नर क्यों ऐसा कह रहे हैं, गवर्नर को एक स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर करना ज़रूरी है, अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी प्रिवेंट करना ज़रूरी है, और प्रूफ ऑफ सपोर्ट अगर वो मांग रहे हैं तो उससे सेफगार्ड ही एक तरह से वो मांग रहे हैं ताकि अनसर्टेनिटी ना आए बाद में। लेकिन अगर हम अगेंस्ट गवर्नर की जो मूव के हम आर्गूमेंट्स देखें तो गवर्नर जो है उनके पास कोई सब्जेक्टिव पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स वो नहीं है कि वो अलग अलग हिसाब से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को फॉलो करें। स्वेरिंग इनको डिले करना जो है वो अंडरमाइन करने की बात है डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को। अब अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं करता क्या कि कितनी जो है वो लिमिट होगी या टाइम लिमिट होगी गवर्नर की डिस्क्रिशन की, या कितनी लिमिट्स होंगी उसकी हंग असेंबली के केस में। गवर्नर जो है वो अक्यूज़ किया जाता है कई बार कि वो यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं क्योंकि उन्हें वही अपॉइंट करते हैं। अननेसेसरी डिलेज से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रादर आती है, ठीक है, तो उससे जो है उस टाइम पे ज़्यादा स्कोप ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग हो जाता है। अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो एक कोडिफाइड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए, कैसे इनवाइट किया जाएगा पार्टीज़ को गवर्नमेंट को बनाने के लिए और ताकि एम्बिग्यूटी कम हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी एम्फेसिस रखा है कि क्विक फ्लो टेस्ट जो है उसको ही जो है स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस बना लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ने फ्रेश कंसर्न्स रेज किए हैं कि जो AMOC है, जो एक क्रूशल ओशन करंट सिस्टम है जो हेल्प करता है रेगुलेट करने को ग्लोबल क्लाइमेट में, वो वीक हो रहा है। AMOC जो है वो साल 2100 तक जो है वो 59% स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से सिवियर डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं वेदर पैटर्न्स में। चेंजेस जो है AMOC के, उससे हमारे समर मानसून पे भी इफेक्ट आएगा। अब AMOC है क्या? ये वास्ट सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स है जो अटलांटिक ओशन में चलता है, एक तरह से ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। वार्म और सॉल्टी सरफेस वाटर जो है वो फ्लो होता है ट्रॉपिकल रीजन से ग्रीनलैंड की तरफ, और आर्कटिक रीजन से जो है कूल्ड वाटर जो है वो डेंस होकर सिंक हो जाता है डेप्थ में ओशंस में, और नीचे से नीचे ट्रैवल करता हुआ ट्रॉपिक्स तक आता है। ठीक है, तो इसी से जो है वो क्लाइमेट पैटर्न्स जो हैं ग्लोबली वो रेगुलेट रहते हैं। इसी की वजह से जो है यूरोप में रिलेटिवली माइल्ड क्लाइमेट भी रहता है। AMOC जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। अब ये डिपेंडेंट है कि ये AMOC जो है डिपेंड होता है डेलिकेट बैलेंस ऑफ टेम्परेचर और सैलिनिटी अटलांटिक ओशन में, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है तो फ्रेश वाटर जो है वो नॉर्थ अटलांटिक में जा रहा है। जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर जाएगा वो लाइट होगा, लेस सॉल्टी होगा सी वाटर से, तो उसके लिए वो सिंक ही नहीं कर पाएगा डीप ओशन में, जो अदरवाइज वहाँ से सिंक होके ट्रॉपिक्स तक जाना है। इससे जो है पूरा सर्कुलेशन प्रोसेस बिगड़ जाएगा। AMOC जो है पिछले 50 साल में ऑलरेडी 15% वीकन हो चुका है अगर हम डेटा देखें तो, और कहा जा रहा है कि अगर ये और वीक हुआ तो इससे जो है ये अगर ये कोलैप्स हुआ तो इससे जो है ये इम्पॉसिबल टू रिवर्स हो जाएगा, और एक मेजर स्लो डाउन या कोलैप्स जो है इससे जो है सिवियर क्लाइमेट डिस्ट्रप्शंस आएंगी। खासकर एल नीनो जो पीरियोडिक वार्मिंग होती है पैसिफिक ओशन की, वो वेदर पैटर्न्स को डिसरप्ट करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है रेनफॉल, ड्रॉट्स, समर टेम्परेचर्स और स्टॉर्म्स टेम्परेचर्स। AMOC जो है वो अटलांटिक ओशन में चाहे एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इसकी वीकनिंग जो है वो क्लाइमेट सिस्टम पैसिफिक में भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो वीक AMOC से जो है वो एल नीनो एपिसोड ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगेंगे। ठीक है, अब स्लो डाउन या कोलैप्स हो जाता है अगर AMOC का, उससे सीरियसली डिस्टर्ब होगा इंडियन समर मानसून ऑल्सो। एक वीक AMOC जो है उससे स्ट्रेंथ ऑफ द विंड्स जो मॉइस्चर लेकर आती हैं अरेबियन सी से इंडिया में, वो भी वीकन हो जाएंगी, तो उसकी वजह से वीकर मानसून रेनफॉल रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ने फैसिलिटेट किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोर दैन 4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस, और जनरेट किया है एम्प्लॉयमेंट फॉर ओवर 36 लाख पीपल ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल। तो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2008 में लॉन्च हुई। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ MSME की।
ये एम करती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स प्रमोट हो। इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसे KVIC के थ्रू और 18 साल के इंडिविजुअल होना चाहिए मिनिमम, कोई इनकम सीलिंग नहीं है असिस्टेंस के लिए। बेनिफिशरीज जो कम से कम 8th क्लास पास हैं उन्हीं को ही जो है 10 लाख तक के प्रोजेक्ट का मिनिमम जो है वो मिल सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, चैरिटेबल ट्रस्ट वो भी एलिजिबल हैं इसमें असिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जननी प्लेटफॉर्म। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जननी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, जो एक सर्विस ओरिएंटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिवली मॉनिटर और मेंटेन करने के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ वुमेन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव एज। ये प्लेटफॉर्म इंश्योर करता है सीमलेस ट्रैकिंग ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। अब ये इंट्रोड्यूस कर रहा है QR इनेबल्ड डिजिटल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड्स, ऑटोमेटेड अलर्ट्स देगा ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के केस में, इनेबल करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशरीज यूजिंग आइडेंटिफायर्स लाइक आभा, आधार एंड मोबाइल नंबर। ओके, सेल्फ रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यिल्दिरिमान मिसाइल। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुर्की ने जो है एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है ICBM का, जिसका नाम है यिल्दिरिमान मिसाइल। तो ये मिसाइल जो है इतना पावरफुल है कि ये टारगेट्स अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका और एशिया हिट कर सकता है और इसकी स्पीड होगी 25 मैक, मतलब 25 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, एक्सट्रीम हाइपरसोनिक स्पीड। और ये फ्यूल होगा ये बाय लिक्विड नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। ओके, 4 रॉकेट प्रोपल्शन इंजन इसमें होंगे। So now let us see all these topics in English. So the first topic is legal fiction in party mergers. This topic is important for our polity section. So Supreme Court's March 2026 ruling in the cooperative societies case has renewed focus on the legal doctrine, which is limiting deeming clauses. Okay, so, and this will have implications for how party mergers are interpreted under the anti-defection law of India. So legal fiction is basically a device in law where something is assumed to be true even though it may not be factually true. Okay, just for the purpose of applying a legal rule, it is perceived as true. For example, the adopted child is considered as the natural child of adoptive parents because so that legal implications can be upheld. So legal scholars have cautioned against its misuse. How it would be misused? So let's understand with just a very basic example that your college starts at 8 a.m. and your attendance in the college happens at 9 a.m. So anyone who is available at 9 a.m. is considered as present throughout the day, okay, or for that particular day. So you what you do is you miss the first lecture of 8 a.m. You just reach at 8:50 or 8:55 a.m. just in time so that the attendance gets marked. So as legally you are present for that day. Okay, you have attended the lecture as per as was the legal norms because you were present at the time of 9 a.m. But originally the fact is that you were not present between 8 to 8:50 a.m. So this is a misuse of legal fiction. Okay, so this is why we say that legal fictions they are legitimate only when its falsity is openly acknowledged. Okay, so there was a Bengal immunity doctrine which was decided by a seven judge constitution bench in which a Calcutta based company who manufactured vaccines and sold them to buyers in Bihar. Bihar assumed that those sales were being occurred where goods were delivered for consumption. So this created a legal fiction for definite purpose, but Supreme Court said that this must be limited only to the purpose and it must not be extended beyond its legitimate field. So there was another March 2026 ruling recently in which the two sugarcane grower cooperative societies were involved. One society, basically these societies, the growers of these societies were their villages were partly in Uttar Pradesh and partly in Uttarakhand. So they were claiming that their society automatically became a multi-state cooperative society once the Uttar Pradesh state was bifurcated into two states. Okay, so at that time the Supreme Court of India said that deeming legal fiction in this case is not valid because originally the purpose was to create only a single state cooperative society. The legal fact may have changed. The legal fiction benefit cannot be given to you that the states have that you are present in two states because the original object was confined to a single state. So how this would be impacted on the anti-defection law? This doctrine has significant implications for the paragraph 4 of the 10th schedule, which says that if 2/3 members of the legislative party agrees to the merger, this would be deemed to have been merged with the
new party, okay, or the party with which the legislators have decided to merge. So this distinction was settled by the Constitution bench in Rajendra Singh Rana versus Swami Prasad Maurya case of 2007, in which the court held that a legislature party threshold alone cannot satisfy the substantive event of the original party. Speaker also has no independent power under the 10th schedule to recognize that this split or a merger. And Supreme Court specifically said that legislators cannot alone effect a merger. The original party, political party itself must take that substantive decision. So the legal fiction benefit was not accorded to those political parties, to those legislators. So this particular legal fiction, or the decline of the legal fiction principle, will have implications for the recent Rajya Sabha chairperson's decision to recognize 7 Aam Aadmi Party MPs within the BJP. And applying this Bengal immunity and Rana case rulings would have led to the opposite conclusion which the Rajya Sabha chairperson has otherwise made. Okay. So the next topic is governor's discretion versus democratic mandate. This topic is important for our polity section. Decision of the governor of Tamil Nadu to delay the swearing-in ceremony of TVK leader Vijay as CM of Tamil Nadu has revived the constitutional debate over the extent of governor's discretionary powers. So governor has reportedly asked TVK leader to furnish proof of support from at least 118 MLAs. TVK has emerged as single largest party with 108 MLAs, but the majority mark is 118. Even with the support of Congress party, the tally has reached to 113, which is still short of the majority mark. So therefore, governor traditionally, you know that it invites the single largest party or coalition for the swearing-in ceremony, and he or she has to ask the that particular coalition or the single largest party to prove its strength through a floor test in the assembly. But governor is insisting on prior proof of majority, and this has sparked criticism. You know that the chief minister is appointed by the governor, and the ministers hold office during the pleasure of the governor, but it does not mean that the pleasure is personal discretion. It is basically exercised through constitutional conventions and democratic norms. So therefore, floor test of the assembly is considered as the only legitimate forum to determine majority support. Judiciary has repeatedly emphasized that legislative majority must be tested on the assembly floor and not decided subjectively by the governor. This was reiterated in Uttarakhand crisis of 2016, where the Supreme Court said that floor test is the ultimate constitutional mechanism to establish majority. But there are certain arguments which support the governor. For example, that governor has a duty to ensure a stable government. He has a duty to prevent opportunistic defections and political instability. So he is acting as if he's seeking support, proof of support, then he's acting in favor of a safeguard against uncertainty. But arguments are there against the governor's move also, like governor cannot impose subjective political standards beyond constitutional conventions. Delaying the swearing-in ceremony also undermines the democratic verdict. The problem is that Constitution does not clearly define the precise limits of governor's discretion in a hung assembly. Governors are also often accused of acting in favor of the union government, and unnecessary delays create political instability and scope for horse trading. So the way forward is to get a codified order of preference for inviting parties to form government, and which can reduce ambiguity. Supreme Court is also emphasizing on quick flow tests, and this should be made a standard constitutional practice. Okay. So the next topic is Atlantic Meridional Overturning Circulation. This topic is important for our environment section. Scientists have raised fresh concerns over the weakening of the AMOC, which is a crucial ocean current system that helps regulate global climate. AMOC could slow down by as much as 59% by 2100. This would trigger severe disruptions in weather patterns worldwide. Changes in the AMOC could also affect the summer monsoon. AMOC, which is basically a vast system of ocean currents in the Atlantic Ocean, which functions like a global conveyor belt, circulating heat and water across the planet. Warm and salty surface water flows from tropical regions towards Greenland, and in the cold Arctic region, the water cools, becomes dense, and then it sinks deep towards the ocean to move towards the tropics. And cold water moves southwards basically, and this is the reverse is also true. Okay, so this is how the conveyor belt forms. AMOC also transports enormous amount of heat around the world so as to help regulate the climate patterns. It contributes to Europe's relatively mild climate. It also plays a critical role in maintaining global climate stability.
So what is happening is that it depends on a delicate balance of temperature and salinity in the Atlantic Ocean. If there will be rapid melting of Arctic ice, this would release large volumes of fresh water into North Atlantic, and fresh water is lighter and less salty than seawater. This would make it harder to sink into deep ocean layers, and this would disrupt the circulation process and slow down the AMOC system. So earlier studies estimated that AMOC had slowed by around 15% over the past 5 decades, and recent research has said that real-time data suggests that it could reach nearly 59% by 2100. The system, if this happens, then system could collapse into a permanently sluggish state, which would be impossible to reverse. A major slowdown or collapse of the AMOC could trigger severe climate disruptions worldwide. For example, El Nino, which is the periodic warming of the Pacific Ocean, it disrupts the weather patterns, influencing rainfall, droughts, storms, and temperatures. If AMOC exists in Atlantic Ocean, but its weakening can significantly affect climate systems in the Pacific also. A weaker AMOC could make El Nino episodes more intense and less predictable. Okay. A slowdown or collapse of the AMOC could seriously disrupt the Indian summer monsoon as well. Research also suggests that a weaker AMOC could reduce the strength of winds which carry moisture from the Arabian Sea into India, okay, which would have a weaker monsoon rainfall. So the next topic is Prime Minister's Employment Generation Program. This topic is important for your governance section. Prime Minister's Employment Generation Program has facilitated the establishment of more than 4 lakh micro enterprises and generated employment for over 36 lakh people during the 15th Finance Commission cycle. So this is a central sector scheme launched in 2008. It is a credit-linked subsidy scheme of the Ministry of MSME. It aims to create self-employment opportunities and promote sustainable livelihoods in manufacturing and services sector. It is being implemented by the KVIC. Any individual who is above 18 years of age is eligible. There will be no income ceiling for assistance for setting up projects under this particular program. Beneficiaries should possess at least class 8th educational qualification for setting up projects which cost above 10 lakh in the manufacturing sector and above 5 lakh in the business or service sector. Self-help groups, production cooperative societies, and charitable trusts are also eligible for the assistance under the scheme. So the next topic is Janani platform. This topic is important for our governance section. Union Health Ministry has launched Janani platform, which is a service-oriented digital platform designed to comprehensively monitor and maintain digital health records of women during their reproductive age. This platform aims to ensure seamless tracking of maternal and child health services. It introduces QR-enabled digital mother and child health cards. It also incorporates automated alerts for high-risk pregnancies. The platform enables registration of beneficiaries using unique identifiers like Aadhaar, and mobile number. It also provides self-registration facilities. Okay. So the next topic is Yildirim missile. This topic is important for your security section. Turkey has developed a prototype of an ICBM which has been named Yildirim missile. So this missile will be able to hit targets across Europe, Africa, and Asia. It can be launched from Turkey, and this can travel at up to Mach 25 speed, which is extremely high hypersonic speed equivalent to 25 times the speed of sound, or nearly 8 kilometers per second. It has 4 rocket propulsion engines, and it is fueled by liquid nitrogen tetroxide, and it is expected to be launched from a mobile wheeled launcher. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.